Hello everyone, welcome to lebdo.com. So here we are going to talk about Android. So before we start Android, I hope everybody is safe at their homes and everybody is doing well. So let me brief you about the session first. We're going to develop a BMI calculator today. You know what is a BMI calculator? It's like we need to calculate the body mass index. So we're gonna check whether our body is healthy, is over obese, or is obese or unhealthy. So we're gonna check with some calculations behind it. So in our Android application we're gonna develop today, we're gonna check if our body is healthier or not. Are we fat? Are we obese? Are we unhealthy? Are we have to put on weight, or we need to lose weight? We'll decide according to the application. So we call it BMI. So we're gonna develop a BMI Android application. So before I start, I would like to discuss about Android first. So Android is a basic platform which is having a Linux kernel. You know what is a kernel? A heart of any OS is called kernel. It's like our body pumps blood from our heart, right? So that heart circulates the system. In the same way, the kernel, that is Linux, which is the operating system behind it, which is being programmed, and the name is given as Android. Okay, so Android is going to be the platform which over which we can develop games, over which we can develop many applications. So which is your favorite application? My favorite application right now in this quarantine days is PUBG. I play PUBG a lot really. At night I used to spend 1 hour, at least just 1 hour for playing games. I hope you're also playing PUBG games. So if you talk about games, if you talk about applications, then it needs something special. You know what? It needs UI. What is UI? A user interface. Who are users? The one who is using the application is called the users. So the basic thing in the application is the UI. So we have to develop a UI. UI is the first thing which appears in front of your screen when you open your application. Let's say if it is a calculator, what it appears? It appears like there is some positive, that is addition sign, there are few subtraction sign, there are few division sign, there are few other multiple number of signs which you need to calculate. So that is what a UI is called, isn't it? So if you open any voice recording application, you will see a button which you need to click on. So that is what a UI, the first visual appearance over your mobile phone. So we have to first develop a UI, and then once you develop a UI, that is user interface, you will be able to develop buttons. You know what buttons are? If you have played Mario games, or if you have played any other games, you might have seen few buttons which you can move left, right, forward and backward. With the help of which you can jump. Even you can change the position, right? So there are few user interface characters. So we're gonna interface, or we're gonna make some UI first, and then we're gonna develop a programming behind the blocks. So let's say if we're talking about BMI calculator. So BMI calculator is basically a ratio of our weight to the height. So let me brief you once more. Let me repeat it once more for you. BMI calculator, if you are having a notebook, you can write it down. It will be very easy for you to understand. I'm repeating it once more, dear. So BMI is a body mass index, which is the ratio of weight in kg to height in meters. But that is the square of height we're gonna calculate. Okay, but this is the ratio of weight upon square the height, right? This is what our formula we're gonna put in our Android application. So I'm repeating it for the last time, dear. If you are having a notebook, you may note it down, because we're gonna use this formula in our session. So what is BMI? BMI is called body mass index, where we're gonna calculate the ratio of our weight in kg to the height in meters, but the square of height we're gonna calculate. So the formula will be weight upon height ka square. This is going to be the formula. Okay, moving on to the next. There are many different kinds of application there in the market. It can be multimedia application where you play your videos, where you go to YouTube and see many different videos. Go to social networking application like Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Snapchat, right? Travel applications, we can go for Oyo, Ola, and these kinds of applications like Make My Trip. These are few travel applications. Utility application is like calculator or some kind of scientific calculator, voice recorders, and even the one we're gonna make it today, that is BMI, is also a kind of utility application. Okay, we need to utilize it. Entertainment, you know that very well, that gamings and few other
thing like Fitbit kind of thing. These all are entertainment applications. And there are also a few applications which are location based, like the GPS based. We can call it Google Maps. Even the Ola uses the Google Map and location based application, the parking assistant kind of thing. So they all are Android application which is installed into your mobile phone to help you out with certain problems. Okay, moving on to the next. There are a few interesting facts, everyone. So you know what? There are 48 billion applications installed in the App Store. And if you remember, it is almost the 88% of the world's smartphone market. So it means that the whole smartphone market, there is 88% of the Android user. So just think and imagine, if you develop an interesting application, if you are developing an interesting application, so that application will be used by 88% of the world's smartphone market. So isn't it interesting? Like if you develop an application, 88% of the world will be using your application, right? But that should be more innovative. It should not be like anything random. But before that, we need to understand how to develop it. So this is one basic example of an emulator application where if you see the UI, it is having few tabs, it is having few buttons, it is having few images, some arrows, some trick mark, some search options. So these are called characters. So we have to edit, we have to make our UI first, and then you will be able to program it. What to do with that block? If you click this button, this should happen. If you click this button, this should happen. You have to be very much sure about making a UI. ठीक है, एक बार मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको. UI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि UI ही डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कैसा दिखता है, और आपके एप्लीकेशन में आगे जो आप बटन पुट करने वाले होते हो या फिर सर्च ऑप्शन पुट करने वाले होते हो, वो सर्च ऑप्शंस या फिर बटन्स वो कैसे दिखेंगे, वो आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. जिसका एप्लीकेशन जितना सुंदर और अच्छा और कन्वीनियंट फॉर यूज होता है, उतना ही उसका एप्लीकेशन पॉपुलर होता है ना. बहुत जैसे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं आपको. अगर आप गूगल प्ले सर्च करोगे सिंगल एप्लीकेशन के लिए, अगर आपको कोई आर्चरी गेम खेलना है, फिर टेबल टेनिस कोई गेम खेलना है, फिर कैरम बोर्ड की कोई एप्लीकेशन है, फिर एग्जांपल लूडो, आजकल लूडो बहुत फेमस है, तो लूडो कोई अगर आपको गेम खेलना है तो आप वही लूडो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो या फिर गेम इंस्टॉल करते हो जो कि देखने में अच्छा होता है, उसके फीचर्स अच्छे होते हैं, है ना, आप इजिली ब्लॉक्स को मूव कर सकते हो, देन ओनली यू चूज दैट एप्लीकेशन फॉर द बेस्ट. So while choosing and making the application, we have to very much sure about developing the UI. And once the UI is developed, we have to give commands to every single buttons, what to perform and what not to perform. Okay, so let's start with the application development. If you're following my screen, then you can just follow my instructions also. Okay, so what I will do, I will open Google and I will just easily write MIT App Inventor. Most of you knows this, but if you do not know, please follow my instruction. MIT App Inventor. I'm again searching for it. You just write MIT App Inventor. So you'll go to the first link, developed by MIT. MIT is a Massachusetts Institute of Technology that is in USA, California. I can click on there. So they have developed a fantastic application development platform where you can easily drag and drop the blocks to perform your task. I can create this app by clicking here, create app. Once I click on create app, it will redirect to me the login page. So you can use your Gmail ID to get it login. Okay, so I can use my Gmail ID or any of the Gmail ID I'm having. So I just clicked on there and I can see my dashboard. So this is my dashboard which appears in front of the screen. Okay, because these are few programs I already made. So I can click on start a new project. Okay, I can just click on my project and I can click start a new project and I can name it like BMI. This is one I'm gonna make in front of you. So BMI is the project name I'm having. I can click on OK. So once I click on OK, it will appear on the top. I can double click there. I can easily open my system. It will take few seconds. Here we go. So this is our UI. This is our mobile phone and this is our UI for the MIT App Inventor. So this allows you to develop applications. Okay. Can you see this mobile phone screen? Yes. So everybody can see this mobile phone screen. Now, how our application is going to look, we have to decide by dragging and dropping few equipments. First, let me introduce you with the MIT App Inventor platform. The first one is the Palette on the left. We call it Palette. This Palette consists of every single equipments you need to drag, like buttons, checkboxes, images, labels, notifiers. Apart from the user interface, you can design your layout, you design your media,
like cam recorder, camera, player, sound recorders, text to speech converters. Even you can make a drawing animation games. You can use the maps like location, circle, marker, navigations. Apart from that, you can even interface sensors in your mobile phone like accelerometer sensor, barometer sensor, and every single sensor you can list it here. But today's task is all about just few buttons. By clicking, we'll be able to check the BMI. Okay, so first we need to have a layout. We need to have a layout of our particular screen. So our layout is divided into two different parts. First, we'll have to enter our weight in kg, and second, we need a box where we can enter our height in meters. So we'll drag a layout first, a table arrangement here. A table arrangement means you have to arrange your drag and drop into this. So table having a very small size, you can increase the size of the table by doing what? I can just easily do 2 columns and I just write 3 rows. So this table will be having 2 columns and 3 rows. In this 2 column and 3 rows, I can drag 3 to the 6 items. So you have to decide what number of items you're gonna drag. For that, you have to make a table arrangement. Where can I find the table arrangement? Table arrangement can be found there in layout. Why there is table arrangement important? Because you can't arrange your items anywhere in the mobile screen. That should be specific. So that's why we tried dragging the table arrangement, and I have given 2 columns and 3 rows. It means we can drag 3 to the 6 items. Great. Now I can just increase the width by fill parent. It means it will fill all the width, and I can give a height that is automatic. It will keep on increasing. Now I want 2 text boxes which increases according to which we want to put the input. जैसे अगर मुझे text box 1 है ये और ये text box 2 है, in the text boxes we have to enter the height and the weight. We have to give it the size also. We can't leave it as it is. Just click on text box 1, rename this as weight. WEIGST. This is a weight block or the weight text box where we'll be entering our weight in kg. Now I'm gonna rename the second text box where we're gonna enter our height, HEIGST, height in meters. So if you open this application, you won't be able to judge कि इसमें क्या लिखना है. तो आपका application ऐसा होना चाहिए कि हमें बताना भी पड़ेगा कि dear, just we can clear a doubt later because I'm just following the session. Okay, we'll get late. Okay, the first box is the weight box. The second box is the height box. In weight box, we have to specify the customers or the users that you have to enter weight there. तो मुझे बताना पड़ेगा इसके अंदर आपको weight लिखना है kg में. So I can drag few more things. Okay, so let me change the height first. So this is what the weight box look like. Let's height be 150 and let the width also be 150, so it will become a square pixel. It will become a square. I can make the same here. 150 height, 150 height, and 150 width. So this text boxes will be having a square pixel. So in the 2 text boxes, I can easily write down 2 different values of weight and height. Great. So now I want to check or write something just below that we need to enter the height and weight. So what I can do, I can just write it here so there is a property section. You can change the height, weight, text, font size, anything you want in the property section. The first one is the palette. Second one is the viewer where you drag and drop the equipments. Third is the components. You can rename the name whatever you have dragged. Like if you have dragged the button, you can rename it. If you have dragged the label, you can rename it. Now the fourth one is the properties. Properties means you can change the background color, font, italic, size, weight, whatever you want to change for that particular button. So if I have clicked on label 1, so label 1 will get changed. So I want to change the text like enter your weight in kg. So you have to write this, enter your weight in kg. ANTER. Okay, enter your weight in kg. What about the second one? Enter your height in meters. I can click on the second one. I'll just write enter your height in meters. Okay,
So I'll write the text element to center, it will become center here. So why it is important? Because whenever user opens the application, they should know that we have to enter kg, weight in kg, and we have to enter height in meters. That's why we have given a label here. We don't need to rename the label because we just want this. Okay. Apart from that, what exactly we need is, after giving it kg and meters, we also need a button which calculates the value, okay, and which gives you a display. So I can just drag one more thing. I can click on table first. I just want 2 cross 2. I don't want more blocks inside this. I just drag 2 here. It's gone. If you want to change the height, you can just do that easily. Let me put it to 160 or 155 for me to look more good. Sorry, 150 is good. I don't want to change it. I can even change the width by 55, so you can see how the width is getting changed. And even I can change the width of this 155, or just we'll write 152. It depends upon your choice. Because I want to fill and complete this whole area. That's why I'm trying to change the values. First one is that weight. Second one is the height we're gonna enter, and the indication is given at the bottom that we have to enter a weight and a height. Great. So now what we'll do, we'll drag a kind of label on the top which will say this is an application. Okay, I'll just increase the label or give a width to the fill width and increase the height by just 50 pixels. So I have just increased the height of 50 pixels, and I just want to write here KNPS BMI app. Okay, I'll just write KNPS BMI app and I'll align the center. And if you want, I want to just change the color of the text. Even I can do that, but I want to change the background. That's better. So here, I can just write the background to pink. I don't know. I do not love pink, by the way. I can just go to orange. Okay, I can click on font bold and you can increase the size of the by 25. The font size goes 25. I can change the height to like say 30 or 25 because now it looks good at least. I can go to 1 more pixel or 2 more pixel. Here we go. So this is one top label we just give, that is KNPS BMI application, where we have to enter a weight in kg and height in meters. अब आपने इसमें weight भी enter कर दिया, height भी enter कर दिया. उसके बाद क्या करना होता है? We have to click a button जिसके हेल्प से आपको अपना स्टेटस पता लगता है. तो we'll drag, आपका स्टेटस कहाँ पता लगेगा? एक लेबल ड्रैग करते हैं इसके बॉटम में जहाँ पे आपको स्टेटस पता लगेगा, और इस लेबल का नाम चेंज कर देते हैं विद नेम ऑफ स्टेटस, STATUS. रिमेंबर, मैंने क्या किया, एक लेबल ड्रैग किया जिस लेबल को मैंने स्टेटस नाम दे दिया, और आपका जो स्टेटस है, आपके हेल्थ का स्टेटस है, वो यहाँ पे शो करेगा जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे. सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टेटस, आई कैन इंक्रीज द हाइट एंड विड्थ so that it will look good. So height to let's say 50 or 40 and the width to fill parent. So it will fill all the width. Great. Instead of text for label, I can just easily write your health status. Your health status is ... आपका health status ऐसा है, आप इसके नीचे लिख सकते हो. Even you can increase the font size to 20. Okay. And you can increase even you can decrease the height so that it looks good. So I can write to 30. Okay, even I just want to create like 25. Great. So this is my health status. Okay, so I can see my health status here. So this status will change. Great. Now the next thing is I need a button. I can drag a button at below. So this button is going to check. So once you enter your weight in kg and your height in meters, you have to click the button and your status will appear here, that you are healthy, you are overweight, you are underweight, or you are obese. You will see it here. Great. So am I audible to everyone? Cephalon, please do confirm, because I'm really Yes sir, you are audible. Okay. But I want to say one thing, that can you just increase the text of your screen, because it seems difficulty to read the text. Is it okay? Yes sir, it's now okay. Okay. And one thing, the student wants to know that from where you have taken the table. Okay, table. If you scroll it here, you'll see a layout. So in layout, you'll see table arrangement.
Okay. So I'm working with user interface. That's why I've clicked on user interface. There are many different options here on the left. You can see. Okay. Now we are on to the button side. So I'm repeating it for 2 minutes. Just please remember, I just tried dragging a horizontal table arrangement. Once I drag the horizontal table arrangement, I made 2 columns and 2 rows. It means 4 items. What are the 4 items? 1, 2, 3 and 4. These are 4 items I dragged into the particular table. टेबल के बाहर फिर मैंने क्या किया? I dragged one more label. I name it as status. मैंने इसका नाम चेंज कर दिया स्टेटस के नाम से because I want to see my status here. And the important part is the dragging a button. So I dragged a button here. Can you see a button in the user interface? फिर मैंने इस बटन को ड्रैग किया. By clicking this button, you will be able to know कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है. So मैं बटन को भी चेंज कर देता हूँ. I will fill width to parent, and I will change the height to somewhere like 50, and text for button I just easily write it here. Click here to know. CLICK. Click here. Okay, click here. So we can just click here to know the result. I can change the font to bold, and if you want to change the background color, even you can do that. So this is a background color. I can just choose one. This is my UI part I finished. Okay, so let me again brief you the session. हमने क्या किया? पहले हमने एक वेट ड्रैग किया, दैट इज अ टेक्स्ट बॉक्स. ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ध्यान देना. फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग किया फॉर हाइट, जहां पे हमें एंटर करनी होती है. तो रिमेंबर, इफ यू वांट टू एंटर समथिंग फ्रॉम योर साइड, आपको कुछ लिखना है अपने एप्लीकेशन में, आपको इनपुट देना है, यू हैव टू यूज दिस टेक्स्ट बॉक्स. तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने वेट से चेंज किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने हाइट से चेंज किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ड्रैग द लेबल. मैंने लेबल ड्रैग किया ताकि यूजर को पता लगे कि आपको इसमें वेट पुट करना है और इसमें आपको हाइट पुट करना है. दैट इज इन केजी एंड मीटर से रिमेंबर. ठीक है. आफ्टर दैट मैंने एक और लेबल टेबल के बाहर ड्रैग किया, ध्यान देना, और एक लेबल टेबल के ऊपर ड्रैग किया. फॉर व्हाट? I just want to write my application name. So I just wrote my application name from KNPS BMI application, and I can see my status here. Clicking here will show you the result. So this is the button which we're gonna click by. Once you click here, you'll be able to see the result here in the status option. Now let's do the program. How to do the program? I am there at the designer section. I can go to blocks. Where to go to block? On the right hand top corner, there is a block option. Okay, right hand top corner, there is a block option. I am in designer option. Let me get back to the block option. By clicking on blocks, you will go to the programming blocks. By clicking on designer, you will roll back to the application whatever you are making. तो जो भी आपने यहाँ पे ड्रैग किया उसी को हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं. I can click on blocks again, and you can see whatever you have dragged, it is shown here, right? Now let's program it. हमने जैसे प्रोग्राम किया था स्क्रैच में, बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रोग्राम करना है. हाउ टू डू दैट? जो जिन्होंने अटेंड सेशन नहीं किया उसको मैं रिमाइंड कर दूं. इस BMI कैलकुलेटर में वी गोना यूज मैथ ऑपरेटर्स. व्हाट आर मैथ ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ओके, सो दीज आर मैथ ऑपरेटर्स. चूंकि हमें यहाँ पे BMI कैलकुलेटर करना है, सो वी नीड 2 वेरिएबल. देयर आर 2 वेरिएबल्स जिनको हमें डिवाइड करना है. द वन इज वेट विच इज गोना चेंज डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, and when one is height which is changing depending upon the user. So these 2 values are changing, that's why we call it variables. Okay, so there are 2 different variables, weight and height. We're gonna check and divide both the values. So how to divide it? First, click on button. So this is the button I'm gonna click. जैसे इस बटन को मैं क्लिक करूंगा, so I will find when button click block. So when the button is clicked, what will happen? You know what will happen? I will set my status. I can click on the status. My status will change. What status change? The text into the status will change to something divided. Where can I find the divide option? I can get divide in the math option. I can just drag this option here and I can choose the sign. I want to divide it. Okay, this is not the one. I can just go to math once more, and here I can scroll it a bit. You'll find a divide option because the formula is to divide weight upon height. So I'm gonna drag this divide option. So my status, the text into the status will change by the division of weight to the square of height. So how to do that? Weight. Where to find the weight? Here to find the weight. What into the weight?
the text written into the weight will be divided, right? So I can choose the text. The text into the weight will be divided by square of height. So where you find the square option? Definitely that is maths. I can go to maths. This is what the square is all about. Return the first number raised to the power of the second number, right? I can click on this, or you can do one more thing. There's other way to do it. Click on math, click on multiply. So I can multiply height by 2 times. It means the same, right? If I multiply height by 2 times, it is the square. I'm going to show you that one here. So the text inside the height. Remember, we have to always select the text because whatever we are writing in the text box is going to change. So height, duplicate this one, and height. This, and remember, height का स्क्वायर. स्क्वायर कैसे करेंगे? ऐसे. ठीक है. Just I want to tell you, these 2 blocks are same. आप कोई भी कर सकते हो. You want to multiply height for 2 times, or you just want to square the height. You can use any of them. Remember, okay? So I'm going to give a square of height. So it's both the same. What the program is here now, you can see. मैं थोड़ा zoom out कर देता हूँ. See, in this program you can see when the button is clicked, the text into the status will change by the division of weight to the square of height. Okay? Or you can do the one I just dragged. So मुझे ये नहीं करना है तो मैं इसको easily delete कर देता हूँ. I can use the dustbin on the right. Okay, I can delete it here. और मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है तो I can delete it here. अब क्या? अब हमने इस स्टेटस को चेंज कर लिया उस वैल्यू से. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं? I will put conditions. Conditions means we have to check the conditions. Where to find the conditions, dear? I'm just googling it for you. BMI index. आप गूगल करना आपको मिलेगा. You will see BMI index. Go to images. So you will see few indexes there that कब overweight है, कब underweight है. So body mass index की value मैं देख लेता हूँ. Can you see this value? Let me open it. Open the image in a new tab. Okay. Can you see this? If it is 18.5, means if the value of BMI is less than 18.5, it's underweight. Let's make the first program. That is less than 18.5. I will put a control, or I will put a conditional statement from control option. So if the value of status is less than, I will drag the status here. If the status is less than, I will drag a first less than sign from the math operator. If less than, what is less than? The value inside the status part is less than. I will first drag the status, and I will always select the text. So the status text is less than what? 18.5. To write 18.5, I can use math, drag this first block, and I can easily write 18.5. इसमें क्या हुआ? अगर if का मतलब कंडीशन, अगर स्टेटस के अंदर 18.5 से वैल्यू नीचे आती है, yes, if the status is less than 18.5, मतलब जो आपका कैलकुलेशन आया वेट अपॉन हाइट का, अगर वो 18 से नीचे है, क्योंकि मैं इसी कमांड के अंदर से लिख रहा हूं क्योंकि सेम फंक्शन काम कर रहा है. सो अगर आपका जो वैल्यू 18.5 से नीचे है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली सेंड अ मैसेज इनटू द स्टेटस दैट सेट द स्टेटस टेक्स्ट टू आप अंडरवेट हो. तो हम स्टेटस के अंदर का जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा. जब भी आपको चेंज करना हो तो यूज द सेट कमांड. क्या चेंज होगा? इसके अंदर का टेक्स्ट क्या लिख के आएगा? वी कैन यूज अ टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर. आप टेक्स्ट लिखिए, जैसे ही आपकी वैल्यू 18.5 से नीचे आती है, जस्ट राइट यू आर अंडरवेट. अंडरवेट. ओके, यू आर अंडरवेट. बहुत इजी है. मैं दोबारा रिपीट कर दूं. पहले हमने एक बटन क्लिक किया. जैसे हमने बटन क्लिक, पहले क्या करोगे आप? एप्लीकेशन ओपन करोगे. इफ यू ओपन द एप्लीकेशन, आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देंगे. पहले टेक्स्ट बॉक्स में अपने वेट को पुट करना है इन केजी. सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में अपने हाइट को पुट करना है इन मीटर्स. अप्रोक्सीमेटली सबका 150 से 180 सेंटीमीटर के बीच में होता है. तो द हाइट विल चेंज फ्रॉम 1.5 टू 1.8. आपको वो वैल्यू आपके हाइट की मीटर में पुट करनी है. ठीक है, मीटर का कन्वर्जन मत पूछना मुझे. आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर. ठीक है, तो अपने हाइट जो भी सेंटीमीटर में है उसको मीटर में चेंज कर लेना.
नेक्स्ट थिंग, वंस यू एंटर यू वेट एंड हाइट, आपको बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, पीछे का प्रोग्राम रन हुआ। पीछे का प्रोग्राम क्या है, जो अभी हम कर रहे हैं। तो व्हेन द बटन इज क्लिक्ड, जो हमारे स्टेटस के अंदर का टेक्स्ट है जो हमने लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा हमने, स्टेटस के अंदर देखो क्या लिखा है। इफ आई क्लिक ऑन स्टेटस, यू विल सी व्हाट इज रिटन हियर, योर हेल्थ स्टेटस इज, ये लिखा है ना। पर अब ये लिख के नहीं आएगा, ये चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, द वन वी प्रोग्राम्ड इट। वी प्रोग्राम इफ द स्टेटस टेक्स्ट इज चेंज टू द डिवीजन ऑफ वेट अपॉन स्क्वायर द हाइट। इन हाइट का और वेट का स्क्वायर जो हमारा स्टेटस चेंज कर देगा। बट इफ द स्टेटस टेक्स्ट इज लेस देन 18.5, ठीक है, अगर उसके अंदर जो टेक्स्ट प्रिंट होके आ रहा है अगर वो 18.5 पे है, ठीक है, सो विल चेंज द वैल्यू। ठीक है, आई कैन डू वन मोर ड्रैग ऑप्शन हियर। मैं एक और करता हूँ, स्टेटस 2 कर देता हूँ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको वैल्यू भी दिख जाएगी और इवन यू कैन चेक व्हाट एग्जैक्टली देयर। सो ये है हेल्थ स्टेटस, और आई कैन जस्ट चेंज द हाइट एंड विड्थ द वे वी डिड। आई कैन जस्ट गिव इट टू 25 and I can just fill the width and I can just center align the text. Okay, I can just rename it to BMI. मैं इसको BMI नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपका हेल्थ स्टेटस दिख के आएगा कि आपकी BMI की वैल्यू कितनी है, और उसके अंदर आप ओबेस्ट हो, हेल्दी हो, वो दिख के आएगा। ठीक है, सो आई कैन डू व्हाट, आई कैन जस्ट गो बैक टू ब्लॉक्स। ठीक है, द स्टेटस won't change, the BMI text will change to weight upon height, and if the BMI text is less than 18.5 then the status will change to underweight. It's very easy. आप मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने एक और एडिशन किया उसमें, क्योंकि आपको वैल्यू भी दिखाई देनी चाहिए, आपकी वैल्यू कितनी है इस BMI की। तो मैंने एक वैल्यू के लिए, what happened is my screen not visible? Yes, sir. I think it's visible. Sifalam, please do confirm if it is visible. Yes, here it's visible. Please don't unmute. It disturbs whole session. You can write your queries in chat window. If it's a technical error at your side, screen is visible. Okay. Ma'am, chat is not available. As you are a guest, so chat window is not available to you. You can ask your queries at the end by unmuting yourself. So please now keep yourself mute. It's a request. So Okay. you can continue. Okay, ma'am. So what I was doing is I'm just repeating it once more. ठीक है, हमने क्या किया, पहले 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए जहां पे हमको वेट और हाइट पुट करना है। फिर हमने बताया कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमें हेल्थ स्टेटस में दिखेगा। स्टेटस का मतलब क्या है, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेस और एक्सट्रीमली ओबेस, these are called status which we're gonna see. And but the value जो आपको दिख रही है 18.5, ये कहां पे दिख के आएगा? So we just added one more, that is BMI value. So we'll change this value. So this value will be changed whenever there's a calculation. तो जैसे आप डिवाइड करोगे वेट अपन हाइट को, the BMI text will change and it will check whether it is less than 18.5 or not. फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, and then I can do what? If the BMI text, now we can use OR operator. Okay, I can just go to logic blocks and I can use an operator that is AND. AND means दोनों होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर BMI text greater than 18.5 है, that is greater than 18.5, and this time कम किससे होना चाहिए, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। मतलब 18.5 से 24.5 के बीच में तो नॉर्मल वेट है, यू कैन से यू आर हेल्दी। तो नॉर्मल वेट का रेंज कितना है, 18.5 से ज्यादा है और 24.5 से कम है। सो और का मतलब एंड, रिमेंबर, मतलब 18.5 से वैल्यू ज्यादा है और 24.9 से वैल्यू कम है, तो हमने और यूज करना, दैट इज एंड। सो आई यूज एंड ऑपरेटर। किससे कम है, 24.9। okay, I just write 24.9. It's very easy. This is I'm using. The BMI text is greater than 18.5 and BMI text is less than 24.9. ठीक है, and फिर क्या होगा अगर, तो you are healthy, then you will be considered as healthy. I can use healthy. You are good. Let me repeat it once more. जो मैंने किया है अभी तक, मैंने 2 कंडीशन कर दी है अभी तक। आप एक अंडरवेट के लिए किया
जो कि 18.5 से कम है तो अंडरवेट। अब फिर मैंने यूज किया रेंज। इफ द वैल्यू इज बिटवीन 18.5 एंड 24.9 देन इट्स अ नॉर्मल केस, राइट। सो मैंने दूसरा कंडीशन में पुट कर दिया। तीसरा कंडीशन क्या है, अब अगर वो 25.0 से ज्यादा है और 29.9 से कम है देन व्हाट विल हैपन, इट इज ओवरवेट। हम तीसरा कंडीशन डालते हैं। आई कैन जस्ट इजिली कॉपी एंड पेस्ट दिस वन। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड डू डुप्लीकेट। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, हल्का स्क्रॉल करता हूँ। इफ द BMI टेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, पुट कर ले ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 and the value is 29.9. okay, so I can just use less than 29.9. इतना है तो क्या होना चाहिए, you can see here is overweight. तो ये जो वैल्यूज है डियर, ये हर जगह सेम रहेंगी। BMI का जो कैलकुलेटर है, जो BMI का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन रहेगा हर जगह। कहीं भी आप गूगल करोगे फॉर मैट्रिक यूनिट, इट इज ऑलवेज द सेम फॉर्मूला, वेट अपॉन हाइट। ओके, यू आर ओवरवेट, OVER, यू आर ओवरवेट। नाउ ये हमने 3 कंडीशन पुट कर दिए। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कंडीशन, अगर ओबेस्ट है 30 से 34.9, I'll put the next condition 30 से 34.9. I can duplicate this command just for you and then I can just easily drag and keep the formula. अगर BMI का टेक्स्ट जो है 30 से ज्यादा है और किससे कम है, 34.9 से कम है, so I can use 34.9. फिर हमारा स्टेटस क्या होना चाहिए, the status will change to obese. You are obese. OBESE. Okay, you can give a status to your fellow mates. Now I have put 4 conditions. 1, 2, 3, 4. Underweight, healthy, overweight, obese. एक और कंडीशन हो सकता है अगर वैल्यू बहुत ही ऊपर जाती है। ये बहुत रेयर केस में जिनकी तबीयत खराब होती है उन पे आता है, जो बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हो। इट्स वेरी इजी, ठीक है। वी विल बी चेकिंग, हम अपने घर में सारे अपने छोटे भाइयों को और बहनों को चेक करेंगे। BMI इज वेरी गुड टू चेक द BMI इंडेक्स, ताकि आप अपने बॉडी को बैलेंस कर सको। सो इफ आई विल पुट द लास्ट कंडीशन, इन द लास्ट कंडीशन आई विल जस्ट ड्रैग द एंड ऑपरेटर। मुझे एंड ऑपरेटर नहीं चाहिए, आई कैन जस्ट इजिली जस्ट वन ऑफ देम। अगर 35 से ज्यादा होता है तो इफ द वैल्यू ऑफ BMI टेक्स्ट इज ग्रेटर देन, anyhow is greater than 35, 34.9 कर लो, is greater than 34.9, जो हमने छोड़ा जहां पे 34.9, so you be considered as extremely obese. Okay, you can just write here extremely obese, EXTREMELY, extremely obese. ठीक है, great. Now we have 4 different conditions, sorry 5 different conditions. एक बार मैं दोबारा प्रोग्राम रिपीट कर दूं। I click button, ये कहां से मिला मुझे, I drag button first. मैंने बटन में ड्रैग किया था because we are completed the program. ये बटन में मिलेगा। This is how I dragged from button. Okay, I just dragged it back. अब जैसे हमने बटन में ड्रैग किया, what we did, just give me a moment here. I think something has been dragged. Yeah. ये मैं वापस डस्टबिन डालता हूँ। डस्टबिन में, वेयर इज माय डस्टबिन, आई हैव टू सर्च इट। यस, ग्रेट। सो आई ड्रैग अ बटन ब्लॉक। सो व्हेन आई क्लिक द बटन, माय BMI टेक्स्ट, रिमेंबर हमारे पास क्या क्या चेंज हो रहा है, BMI चेंज हो रहा है और स्टेटस चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इफ यू क्लिक ऑन द डिजाइनर यू विल बी एबल टू सी वो डिजाइनर और BMI है क्या। सो ये देखो BMI और स्टेटस, ये BMI और स्टेटस, तो ये है BMI की वैल्यू आपको शो होगी यहाँ पे और यहाँ पे आपको स्टेटस शो होगा। BMI का वैल्यू मतलब जो नंबर वैल्यूज आएंगे 24.9, 34.9 और यहाँ पे आपका स्टेटस शो होगा। तो यही जो आपका BMI है, अगर ऊपर नीचे होता है, सो यू विल बी एबल टू प्रिंट अ वैल्यू इन द स्टेटस, दैट इज यू आर अंडरवेट, यू आर ओवरवेट, यू आर हैविंग एक्सट्रीमली ओबेस और यू आर हेल्दी।
तो आप अपने कंडीशंस को यहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई जस्ट इजिली डिवाइडेड द वेट डिवाइडेड बाय हाइट, ओके, स्क्वायर ऑफ हाइट बेसिकली by using math operator. I use math operators here, and then I use a condition that if my BMI text is less than 18.5, so I'm gonna check underweight. If my BMI status is greater than 18.5, it's healthy, and you can similarly do the same. I hope you understood this block. Okay, we can just discuss things later at the end of the session. Now let's build our application. It's very easy. आप डिजाइनर में जाएंगे, ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में चाहिए, तो आप अपना एंड्रॉइड मोबाइल फोन रेडी करिए। इफ इट इज MI, दैट इज MI का Xiaomi का मोबाइल फोन है, तो आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं। अब आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कैसे करेंगे? सो हाउ टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इनटू योर मोबाइल फोन, देयर इज अ स्पेसिफिक वे। सो देयर आर टू वे टू डू दिस। यू कैन क्लिक ऑन बिल्ड, ओके, ऑन द टॉप। इस बिल्ड पे ऐसे क्लिक करेंगे आप, यू विल सी टू वेज टू डू दिस। ईदर यू डाउनलोड दिस APK फाइल टू योर कंप्यूटर, आप इस APK फाइल को कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और उस APK फाइल को अपने मोबाइल फोन में कॉपी करके इंस्टॉल कर लीजिए। दिस इज वन वे टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इनटू योर मोबाइल फोन, बिकॉज ये आपको गूगल प्ले पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी अभी हमने बनाया है। ओके, द सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू डू इट राइट नाउ, यू कैन जस्ट जनरेट अ QR कोड। हम एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके अपने कैमरे से, अगर आपका MI का फोन है, आपका कैमरा ही आपका QR कोड की तरह काम करता है। अगर आपका इसके अलावा और कोई फोन है, यू कैन यूज QR स्कैनर। You can install a QR scanner app in your mobile phone, जिससे आप इस QR कोड जो मैं जनरेट करूंगा उसको आप स्कैन कर सकते हो। I can just easily. Yeah, you can open your camera dear for this. Okay, once you open your camera, you will read the QR code and you can install the application. Okay, अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। And there is a problem. Sometime it happens कि आप अपने इंस्टॉल के लिए एक्सेस और परमिशन चाहिए होता है, तो अपने सेटिंग में जाके ओपन सोर्स एप्लीकेशन को परमिशन देना होता है। If sometime it happens, I will let you know that. Okay, so I can click on QR code. मैं QR code generate करता हूँ, and you can scan the QR code and see if your application is working. I'm just clicking the QR code, and it will take few seconds to generate the QR. Once the QR is generated, you can open the QR code application, or if you are having an MI Xiaomi phone, you can just open the camera. The QR code will work. Just give it a moment. The QR code will generate in a second. Yeah, this is the QR code. You can scan this QR code and install this application. Okay, give yourself 2 minutes. Install this QR code and let me know if your program is working. Okay, let me do it by myself. मैं करके आपको दिखा देता हूँ. Give me a moment. I'll open my camera and show it to you.